तो उतना फोकस पैसे पे ना रखें फॉर योर फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट। मेरे को तो खूब मजा आ रहा है भाई। मैं तो दोनों कर ले रहा हूँ, मेरे को इतना मजा आ रहा है। मेरे को तो कोड करने में मजा आता है, मैं कभी भी लिख दूँ। Hey guys, do you want to know how to become a freelancer, earn extra money, and also build your profile? If yes, then please watch the video till the end. आज हमारे साथ है लक्ष्मण, who works in Booking Amsterdam, but he is also working as a freelancer with TopTel, which is a company that takes only top 3% developers in the world. Lakshman will be telling us how you can start your career as freelancer, how much money you can make, and what are the skills required before you start as a freelancer. So let's hear it from Lakshman Sharma, all the way from Amsterdam. Hey Lakshman, how are you doing, man? How are you? I'm good, I'm good. Everything is really nice. And the weather is also pretty good here. And I'm very excited to shoot this with you. Yeah. But you don't look excited, man. I know, I know. I'm usually like this. I don't like to put up fake smiles like other people. So I'm sorry. Oh my God, are you talking about me? No, 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 no. No, I'm just kidding. I'm just kidding. So Lakshman, ये बता यार कि how did you get motivation to start freelancing? Like college में भी करता था या फिर like you started very recently? No, like I started, remember, like जब हम साथ में थे वर्कशॉप में, I was talking to my friends from college, so they told me कि तू हमारे साथ कुछ पार्ट टाइम प्रोजेक्ट कर ले, अगर तेरे पास टाइम हो तो, and then you can like learn something new. तो मैंने ऐसे ही मजाक में स्टार्ट कर दिया था एक मोबाइल ऐप पे काम करना, और आई थिंक इट वाज वेरी फन, सो आई जस्ट कंटिन्यूड, आई जस्ट वेंट विद द फ्लो. सो दैट वाज वन थिंग कि मेरे को सीखने को मिल रहा था नया, तो वेरी एक्साइटिंग. And दूसरी thing, would I would say कि extra flexibility with the money you get, right? So Yeah. like people don't appreciate it, but yeah, No, I you appreciate it. yeah, yeah, I know. But a lot of people don't, right? So yeah, anyway, so yeah, that was the second part. So Lakshman यार ये बता कि how did you prepare yourself to become a successful freelancer? Like give some advice कि how can somebody who is just doing their 9 to 5 or who is a student, how can they become Mm-hmm. a successful freelancer? What preparation is needed? I think मैं मेरा केस बताता हूँ. तो the first thing that I did कि मैं backend developer था back when we were working together. तो मैंने क्या किया कि आई ट्राइड एक्सपेंडिंग, कि मैंने थोड़े मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लाइक कोर्सेज किए ऑनलाइन, एंड देन आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, कि मैंने खुद से कुछ बनाने की कोशिश की, और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा काम किया जो मैं पहले बता रहा था. तो उससे मैं थोड़ा और कंफर्टेबल हुआ, मैंने और थोड़ी मेरी प्रिपरेशन हुई कि मैंने कुछ बनाने की कोशिश की खुद से. उसके अलावा दूसरा मेरा मेजर प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आई थिंक अभी भी काफ़ी उतना इम्प्रूव नहीं हुआ है. बट उसके लिए मैंने लाइक आई स्टार्टेड टॉकिंग मोर विद पीपल. मैं थोड़ा लाइक बाई नेचर इंट्रोवर्ट हूँ, तो आई स्टार्टेड टॉकिंग मोर, कि आई स्टार्टेड मेकिंग लाइक ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ मोर प्रेजेंटेबल. So basically, you are saying that you worked on your technical skills by taking some extra projects like front end, back हम्म. end development, and also you हम्म. worked on your soft skills like communication and all to make yourself हम्म. more presentable. So, ये बता कि how can a new person start with their freelancing journey? Like, tell us about two scenarios. One, if he's a student, and second, if he is a या professional. या आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि स्टूडेंट और प्रोफेशनल के लिए ये काफ़ी डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती है. Like I'll start with professionals, like the people who are already working, right? तो उनके लिए like it's very similar to my case, कि you are already working with some tech stack, so you are comfortable with some particular domain, uh, like of software development, like you might be good at backend development or mobile app development, so use that. उसी skills के through like try to get some initial projects, work on those, and if everything works well, then you can try to expand. And for students, I would say ki experiment a bit, like do some mock projects, like do on your own, do some web apps. Like there are so many like small ideas. Just make a task management app. कोई मल्टीप्लेयर गेम बना सकते हो जिसमें लाइक दो डिफरेंट यूजर्स ब्राउजर्स पे खेल रहे हैं. कोई सिंपल मशीन लर्निंग का मॉडल बना सकते हो. एक्सपेरिमेंट, एंड देन लाइक वट एवर यू लाइक द मोस्ट, और जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल आपको फील हो रहा हो, जस्ट गो विद दैट. Try to find similar projects, and at the same time when you are practicing, आपका portfolio भी बनता जा रहा है that you have worked on like these kind of things, right?
तो दैट्स आल्सो वेरी हेल्पफुल टू शो टू पीपल कि आपने सेम चीज़ों पे काम किया हुआ है, तो यू विल गेट सिमिलर थिंग्स आई थिंक। सो बेसिकली यार स्टूडेंट्स को तो फिर डबल फायदा होगा, राइट? क्योंकि दे आर डूइंग प्रोजेक्ट्स, दे आर अर्निंग सम मनी, एंड ऑल्सो उनका रेज्यूमे बिल्डअप होते जा या रहा है, जिससे उनको फुल टाइम जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन सर्टेन प्रोजेक्ट्स। and additionally like when you show this experience to other people, they are interested in you. तो आई थिंक लाइक 4 साल बाद तुम 4 साल के तभी पढ़ लो, सब उस स्टेज पे आते हैं कि जॉब सबको चाहिए होती है 4 साल बाद। तो इफ यू ऑलरेडी हैव सम एक्सपीरियंस तो आप ऑलरेडी 2 या 3 स्टेप आगे हो काफी लोगों से। So, bro, freelancing में start करने के लिए do we need to do some kind of networking also, or is some networking needed to enter this domain? Yeah, I think it would it's really necessary. So I would say कि just talk to people who are already an expert in this area or are doing something, right? Let them know that you are available. क्योंकि क्या होता है ना, mostly like if I'm working and then I get some new project और मैं already काफी overloaded हूँ, तो what I would do is कि जिन लोगों को मैं जानता हूँ, I would just refer them to the other developers that I know. So it's really nice. Just network with people, talk to them, let them know that you are interested. Network करने के लिए you can go to LinkedIn. There are so many recruiters that are posting कि आप उनको चाहिए लोग जो काम कर सके, उनको just बता दो कि मैं interested हूँ। उसके अलावा like you can join a lot of Facebook groups, angel list पे different startups को contact करो, उनको बताओ कि उनका idea आपके लिए क्यों appealing है, आप उसमें कैसे contribute कर सकते हो। Product hunt पे there are so many people who are looking for like founders or some developers. You can go to Hacker News. There are regular posts there that people need developers. और also there is also one factor कि आप अपने fellows और friends से touch में रहो काफी, क्योंकि मैंने भी काफी सारे, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि स्टार्टिंग में मेरे को जो भी काम मिला या जो भी मैंने किया वो थ्रू मेरा फर्स्ट डिग्री कॉन्टेक्ट था, फ्रेंड्स जो थे कॉलेज के। So basically, you want to say कि keep your friends close and keep your recruiters even closer. या कीप एवरीवन क्लोज मैन। So, bro, ये तो हो गई नेटवर्किंग की बात कि how can somebody start with networking. But अगर किसी को established channel से freelancing start करनी है, then what are the some formal ways of starting freelancing? Yeah, I think that's a very good question because there ki already काफी सारे channels or platforms हैं where you can go and register and they find like gigs for you. So I think हम description में viewers के लिए थोड़े से add कर देंगे, but I'll just name a few कि there's TopTel, there's Upwork, there's Fiverr, there's Crossover, there we work remotely and all of those platforms. तो उनमें I think mostly होता क्या है कि you go register, they find jobs for you, you apply and then like you just start working immediately. So, Lakshman, मुझे पता है कि your most of your experience is with TopTel, and TopTel is very Yeah. reputed platform. Only top 3 developers can crack into TopTel. So, tell us about its hiring process and how could you get into it? Thanks for the top 3% developer compliment, Amit. You deserve तो it, man. या थैंक्स। तो मेरा मोस्टली एक्सपीरियंस टॉपटेल के साथ है, तो आई थिंक फॉर स्टार्टर्स, फॉर बिगिनर्स इट वुड बी नाइस इफ वी कैन शेयर सम इनसाइट्स अबाउट द हायरिंग प्रोसेस। तो आई वुड से कि मेरा एक्सपीरियंस जो है मैं वो शेयर करता हूँ। तो जो पहला आपका इनिशियल राउंड होता है, उसमें राउंड नहीं, एप्लीकेशन प्रोसेस है। आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, अपना एक्सपीरियंस और व्हाट इज द टेक स्टैक यू आर मोस्ट कंफर्टेबल विद, वो सब एंटर करके यू सबमिट योर एप्लीकेशन। आफ्टर दैट समवन वुड रीच आउट टू यू। फर्स्ट थिंग जो होती है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज कमांड और पर्सनैलिटी टेस्ट टाइप होता है। तो उसमें लाइक समवन वुड कम, दे विल टॉक टू यू अबाउट यू, लाइक व्हाट मेक्स यू यू, ऐसा टाइप का सवाल। और लाइक लाइक व्हाट आर यू वर्किंग ऑन, और लाइक आप क्यों इंटरेस्टेड हो इस टाइप की लाइफस्टाइल में, ऐसे टाइप के सवाल। तो यू शो हाउ वेल यू आर इन कम्युनिकेशन। तो उसके बाद होता है एक ऑनलाइन टेस्ट आता है, उसमें आई थिंक अराउंड 60 मिनट्स और 75 मिनट्स एंड यू गेट 3 और 4 क्वेश्चंस टू सॉल्व, जो मोस्टली लाइक हैकर रैंक वगैरह टाइप के प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। उसके बाद देयर इज अ लाइव स्क्रीनिंग। लाइव स्क्रीनिंग में क्या होता है कि आप को एक लाइव रिक्रूटर रहता है, वो आपको 2 प्रॉब्लम देगा, आपको 1 घंटे टाइप में करना होगा वो, और यू नीड टू एक्सप्लेन योर सॉल्यूशन टू हिम। और अगर आई थिंक टाइम बचता है तो समटाइम्स दे एक्सपेंड ऑन द प्रॉब्लम्स कि आपको उसका वेरिएंट दे दिया या उसको बोल दिया कि अगर ये भी हो तो कैसे करोगे। तो ये होता है। इसके बाद आता है राउंड जो आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा लगा था और वो काफ़ी बढ़िया भी है। उसमें होता है कि आपको 2 वीक का टाइम मिलता है और आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है। लाइक मेरे को आई रिमेम्बर कि मेरे को मिला था टाइम शेड्यूलर टाइप का प्रोजेक्ट, जिसमें एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज़ का
और एक कंपनी अपने सारे एम्प्लॉयज का टाइम मैनेज कर सकती है कि कौन कितना टाइम काम कर रहा है, ऐसे टाइप ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। इसमें आई हैड टू डू बैक एंड फ्रंट एंड और सारी अच्छी चीज़ें, लाइक मतलब आई हैड टू टेक केयर ऑफ डिज़ाइन, आई हैड टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी और एनी काइंड ऑफ वल्नरेबिलिटीज इन द सिस्टम, और बैक एंड और कितना इजी टू स्केल है या नहीं है। और इसका जो इंटरव्यू था, लाइक 2 वीक बाद देयर वाज अ डिस्कशन विद अ रिक्रूटर, और उसमें क्या था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था कि फर्स्ट 30 मिनट्स में ही वॉज बिहेविंग लाइक अ टेक्निकल पर्सन। तो वो मेरे कोड में मिस्टेक्स देखने की कोशिश कर रहा था कि मैंने टेस्ट कवरेज कैसा किया है, इसमें कोई सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, या मेरा डिज़ाइन कैसा है, यूआई यूएक्स कैसा है, ऐसे टाइप की चीज़ें। आफ्टर 30, मतलब वो फर्स्ट 30 मिनट्स के बाद जो सेकंड फेज था इंटरव्यू का, उसमें ही इज़ मोस्टली बिहेविंग लाइक अ यूज़र, कि अगर मैं एक यूज़र हूँ तो मैं ये मेरे को एक्शंस हैं कि मेरे को कितना इजी टू अंडरस्टैंड है, या मेरा ये फ्लो है, ये मैं अचीव कर पा रहा हूँ सिस्टम से कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बहुत ही अच्छा राउंड था, मेरे को काफ़ी मज़ा आया था। तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद यू जस्ट लाइक नेम योर प्रेफरेंसेस और स्टेट योर प्रेफरेंसेस कि आपका रेट क्या रहेगा, आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो, आपका एंगेजमेंट किस टाइप का था। एंगेजमेंट ऑप्टल प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है, 2-3 टाइप का रहता है कि लाइक यू कैन हैव आर्ली अवेलेबिलिटी और यू कैन हैव पार्ट टाइम। पार्ट टाइम में आपको 20 आवर्स पर वीक देने होते हैं, और फुल टाइम में यू नीड टू गिव 40 आवर्स पर वीक। तो जस्ट स्टेट योर प्रेफरेंसेस इन द लास्ट फेज, और उसके बाद यू कैन गेट स्टार्टेड। और वंस यू गेट स्टार्टेड के बाद कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। सो लक्ष्मण, लेट्स टॉक मनी, क्योंकि तुमने शुरू में बताया था कि एक्स्ट्रा मनी मिलता है। Yeah. तो कोई नया बंदा है एंड ही इज स्टार्टिंग, Mhm. ही और शी इज स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग, हाउ डू दे प्राइस देमसेल्फ, हाउ मच मनी दे कैन एक्सपेक्ट एज अ बिगिनर और एज अ प्रोफेशनल? या आई थिंक कि मैं इसको भी वैसे ही स्प्लिट करता हूँ, स्टूडेंट और प्रोफेशनल वाला आइडिया जो हमने पहले किया था। प्रोफेशनल्स के लिए आई थिंक कि आप अभी जो अपने फुल टाइम जॉब में जो आपका वर्थ है, जस्ट प्राइस योरसेल्फ लाइक इन सम सिमिलर अमाउंट, लाइक योर आर्ली और योर वीकली, लाइक व्हाटएवर योर पे साइकिल इज। तो उसी हिसाब से कर सकते हो। बट स्टूडेंट्स के लिए इट्स अ बिट ट्रिकी, क्योंकि यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो शुरू में फोकस एक्सपीरियंस और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने पे रहना चाहिए। कि तो उतना फोकस पैसे पे ना रखें फॉर योर फर्स्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स, कि एक बार एक दो आपने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कर दिए, उसके बाद आप कोड कर सकते हो जो वट एवर यू विश फॉर। आई वुड से कि मैंने तो लोगों को अराउंड लाइक बिगिनर्स को एज लो एज 10-20 USD पर आवर पे करते हुए देखा है। और जो काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, आई सीन पीपल even pay more than $100 or more than $120 to experienced developers. सो लक्ष्मण यार, ये बता कि अभी तो कोविड-19 का समय चल रहा है, लाइक इट्स अ ग्लोबल पैंडेमिक, पूरा लाइक कई जगह पे रिसेशन आया हुआ है, जॉब लॉस हो रहा है, लाइक Mhm. इट्स अ वेरी टफ टाइम। सो Yeah, व्हाट्स योर टेक कि हाउ फ्रीलांसिंग कैन हेल्प अ पर्सन ड्यूरिंग कोविड-19? या अमित, आई थिंक कि अभी जो जॉब लॉस से काफ़ी लोग इम्पैक्ट हुए हैं, उनके लिए इट्स वेरी गुड कि वो टाइम स्पेंड करके कुछ प्रोजेक्ट्स करें, तो दे कैन टेक केयर ऑफ देयर इमीडिएट फाइनेंसेस, जो भी हैं, जो भी इम्पैक्टेड लोग हैं। उसके बाद एन एडिशनल बेनिफिट आई वुड से कि अगर आप एंगेज रहोगे तो इट विल नॉट कॉज यू एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल दे आर फ्री, दे थिंक थिंग्स एंड देन दे गेट इनटू डिप्रेशन, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है आई थिंक। अदर देन दैट ऑल्सो लाइक इफ यू आर एक्टिवली वर्किंग, तो आप अपने स्किल्स जो है वो और रिफाइन कर रहे हो या और बेटर कर रहे हो, तो यू विल नॉट गेट रस्टी ओवर टाइम। और अगर हो सकता है अगर आपको काफ़ी मजा आ गया तो लाइक यू कैन इवन कंटिन्यू दिस आफ्टर पैंडेमिक, बिकॉज दिस लाइफस्टाइल इज वेरी अपीलिंग। तो अगर आपको सही में काफी मजा आया तो लाइक व्हाई नॉट जस्ट डू इट लाइक ऑल, या लाइक फुल टाइम। या सही है, तुमको मजा आ रहा मेरे को तो खूब मजा आ रहा है भाई। मैं तो दोनों कर ले है? रहा हूँ, मेरे को इतना मजा आ रहा है, मेरे को तो कोड करने में मजा आता है, मैं कभी भी लिख दूँ। सही है। So after all the discussion that we had about the good things about freelancing, and we are discussing freelancing like it's the best thing ever. Let's discuss about what are the downsides of doing freelancing. Like what are the cons of having freelancing, maybe as your part-time or even full-time job. Yeah, I can just like tell you a few from the top of my mind कि the first thing that we talked about कि शुरू में प्रोजेक्ट लैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो you might have some financial glitches in the beginning, but that's a part, like don't be afraid। और उसके अलावा लाइक इफ यू आर नॉट वेरी आउट गोइंग,
तो इससे आपके सोशल लाइफ पे थोड़ा लाइक इम्पैक्ट हो सकता है। आई थिंक इफ यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग वेल विद योर फ्रेंड्स और सारा टाइम काम ही पे फोकस कर रहे हो, तो like you need to have a good balance between work and life. And also like if you're not very careful, you can like I'm pretty sure you can compromise your work life balance. क्योंकि like if you enjoy it too much, तो आप ज़्यादा engage रहोगे, तो it can impact other parts of your life. So you need to find the right balance. So इसके अलावा I think one very minor point कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको formal full time job experience मांगती है, like a lot of PR applications or like I don't know mortgage loans, bank loans, etc. So just be careful about those as well. Yeah, I think those are the only cons I would say, but there are a lot of good things. So thanks a lot, Lakshman. Thanks for giving your valuable time and telling our young viewers कि हम freelancing से कितने पैसे कमा सकते हैं, उससे हमारे करियर को क्या फायदा हो सकता है. Yeah, thanks to you, Amit. It was a nice opportunity कि मैं अपना experience अपने viewers के साथ share कर पाऊँ. So it can help them as well. And also we'll be bringing out a lot of content for you guys. So yeah, keep an eye. Okay, अब जाते जाते थोड़ा सेल्फ प्रमोशन करते हैं. Oh yeah, sure. Yeah. Like the video, subscribe, spread some love, share it with other people who you think it might be relevant for. Hey guys, if you have any questions, please drop your questions in comment section and हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम सारे comments reply कर पाएं. Peace.